हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे घर पे बना रहा है मशरूम सब्जी। मशरूम और पनीर के साथ। गाइस, अभी हम मशरूम को पानी में उबालेंगे। देखिए गाइस, मशरूम पानी के अंदर उबल चुका है। प्याज काटेंगे। हम अच्छी तरह से बारीक प्याज कटिंग कर लेंगे। काट रहे हैं मेरे पापा। ग्रीन चिली हम बारीक कटिंग करेंगे। अदरक को हम अच्छी तरह से कटिंग करेंगे। लहसुन को हम अच्छी तरह से कटिंग करेंगे। टमाटर अच्छी तरह से कटिंग कर लेंगे। बहुत ही बारीक कटिंग करेंगे। अच्छी तरह से टमाटर कटिंग करेंगे। मशरूम और पनीर बनाने के लिए हमारा मसाला रेडी। देखिए गाइस, टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक कटिंग करके थाली में रेडी हो गया है। हम तेल में जीरा डालेंगे 1 चम्मच। अब हम डालेंगे अदरक। ये हमारा अदरक डल चुका है। कढ़ाई में तेज पत्ता, लहसुन, अब हम डालेंगे इसमें हरा हुआ मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे प्याज।
हम डालेंगे इसमें टमाटर, वो भी कटा हुआ। बहुत ही लाजवाब होने वाला है मशरूम। आप इसको एंड तक देखिएगा। देखिए इतना अच्छा लग रहा है टमाटर। इसका ढकना गाइस, मैंने मशरूम कटिंग करके एक थाली में रख लिया है। देखिए गाइस, मेरा टमाटर बिल्कुल पक गया है। देखिए गाइस, इतना स्वादिष्ट लग रहा है मेरा टमाटर। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। देखिए गाइस, अब हम इसमें डालेंगे नमक। और मिर्ची पाउडर। हल्दी पाउडर। पनीर मसाला डालेंगे। और गरम मसाला। अब हम डालेंगे धनिया पाउडर। और हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गाइस, मेरा मसाला भी रेडी हो गया है। अभी मैं थोड़ी देर बाद मशरूम को डालूंगा। गाइस, देखिए कितना अच्छा मशरूम लग रहा है। मैं थोड़ी देर बाद मैं डालूंगा मसाले के अंदर।
हूँ और मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगा, मैं इसे खाऊंगा। गाइस देखिए, ये है पनीर। देखिए मेरे पापा ने इतना अच्छा बड़ा पीस काटा है। अब मैं मशरूम के साथ मिला के पनीर खाऊंगा। टेस्टी होगा गाइस। अब मशरूम पनीर के साथ मैं मसाला के साथ मिक्स करूंगा। गाइस मैं ऊपर से डालूंगा लहसुन। गाइस मेरे पापा को पसंद है बहुत ही लहसुन। पानी, जिसके हम चावल रोटी के साथ खा सकेंगे। गाइस बाजरे का रोटी मम्मी बना रही है। बाजरे का रोटी बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। और पनीर मशरूम के साथ मैं यही रोटी खाऊंगा। पनीर मशरूम रेडी हो गया है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। गाइस आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर चुका तो मैं बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय गाइस। गाइस अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके लिए आपका थैंक्स, धन्यवाद दिल से।